Hari Om Tat Sat. 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 Warm welcome to everyone in this auspicious occasion of Vijay Dashami. We celebrate Vijay Dashami as the day of victory of Dharma over Adharma. It's the day when Lord Ram, he killed the demon Ravan. And it is the day when we recommit ourselves and take a sankalp to follow the path of Dharma. And on this auspicious day, the 7th batch of our yoga teachers training course students, they are graduating. They are all here, shining. So we'll start the program with the Shanti part. Settling into a comfortable meditative asana. Eyes closed, hands in a mudra of your choice. Spine upright. Make sure the body is comfortable. Relax each and every part of the body and make your body still. Then be aware of the place where we are. We are here in Shivananda Hall, in the presence of the Guru. Let the mind be in a calm, peaceful, and relaxed state. Going into the heart space, the Hridaya Akash. Visualize a flame burning brightly and steadily. Maintaining the awareness on the flame, we will chant Om 3 times and Shanti Path all together. Breathing in deeply for Om chanting. Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om.
we are going to chant Guru Stotram. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनः बिन्दुनादः कलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा
Tasmai Shri Gurave Namaha. Gururadhiranadishcha Guru Paramadaivatam Guroho Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyanamoolam Gurormurtihi Pujamulam Gurorpadam Mantramulam Gurorvakyam Mokshamulam Gurorkripa Mokshamulam Gurorkripa Mokshamulam Gurorkripa. Om Shanti 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 Hari Om. Now we are going to have the Havan with the chanting of Lalita Sahasra Namavali, and while the Havan is being performed, the graduating students, they will be performing the Kumkum Archana, offering the Kumkum to Devi. गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। And now we will conduct the Havan with Sri Lalita Sahasranamavali. After each mantra Swaha will be chanted. At that time you can make your offering, the Kumkum offering, and everyone else can make a mental offering. Om Shri Matre Swaha, Om Shri Maharagye Swaha, Om Shri Matsimhasaneshwaryai Swaha, Om Chidagni Kunda Sambhutayai Swaha, Om Devakarya Samudyatayai Swaha, Om Uddadbhanu Sahasrabhayai Swaha, Om Chaturbahu Samanvitayai Swaha, Om Ragaswarupa Pashadhyayai Swaha, Om Krodhakarankushojwalayai Swaha, Om Manorupekshuko Dandayai Swaha, Om Panchatanmatra Sayakayai Swaha, Om Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandalayai Swaha, Om Champakashoka Punnaga Saugandhikala Satkajayai Swaha, Om Guruvinda Mani Shreni Kanat Kotira Manditayai Swaha, Om Ashtami Chandra Vibhrajata Alakasara Shobhitayai Swaha, Om Mukha Chandra Kalankabha Mriganabhi Visheshakayai Swaha, Om Vadanasmara Mangalya Griha Torana Chillikayai Swaha, Om Vakta Lakshmi Parivaha Chalanmeenabhalochanayai Swaha, Om Navachampaka Pushpabhanasa Danda Virajitayai Swaha, Om Tara Kanti Tiraskari Nasa Bharana Bhasurayai Swaha, Om Kadamba Manjari Klipta Karna Pura Manoharayai Swaha, Om Tatanka Yugali Bhuta Tapanodupa Mandalayai Swaha, Om Padmaraga Shiladasha Paribhavi Kapola Bhuve Swaha, Om Pavamadruma Bimbashri Neyakari Radanachadayai Swaha,
ॐ शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै स्वाहा ॐ कर्पूर वीटिकामोद समाकर्षि दिगन्तरायै स्वाहा ॐ निज संलाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छप्ये स्वाहा ॐ मन्दस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसायै स्वाहा ॐ अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजितायै स्वाहा ॐ कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदरायै स्वाहा ॐ कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्वितायै स्वाहा ॐ रत्न ग्रैवेय चिंता कल्लोल मुक्ता फलान्वितायै स्वाहा ॐ कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपन्न स्तन्यै स्वाहा ॐ नाभ्याल वाल रोमालि लता फल कुचद्वये स्वाहा ॐ लक्ष रोम लता धारता समुन्नेय मध्यमायै स्वाहा ॐ स्तन भार दलन मध्य पट्टबन्ध वलित्रयायै स्वाहा ॐ अरुणारुण कौसुम्ब वस्त्र भास्वत कटितट्यै स्वाहा ॐ रत्न किङ्किणिका रम्य रशना धाम भूषितायै स्वाहा ॐ कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्वितायै स्वाहा ॐ माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजितायै स्वाहा ॐ इन्द्र गोप परिक्षिप्त स्मरतु नाभ जङ्गिकायै स्वाहा ॐ गूढगुल्फायै स्वाहा ॐ कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्वितायै स्वाहा ॐ नखदीदिति समचन नवचन तमोगुणायै स्वाहा ॐ पदद्वय प्रभाजाल प्राकृष्ट सरोरुहायै स्वाहा ॐ शिञ्जान मणिमज्जीर मणिदित श्रीपदाम्बुजायै स्वाहा ॐ मरालि मन्दगमनायै स्वाहा ॐ महालावण्य शेवधये स्वाहा ॐ सर्वारुणायै स्वाहा ॐ अनवन्दायै स्वाहा ॐ सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा ॐ शिवकामेश्वराकस्थायै स्वाहा ॐ शिवायै स्वाहा ॐ स्वाधीन वल्लभायै स्वाहा ॐ सुमेरु मध्य शृंगस्थायै स्वाहा ॐ श्रीमन्नगर नायिकायै स्वाहा ॐ चिन्तामणि गृहान्तस्थायै स्वाहा ॐ पञ्चब्रह्मासनस्थितायै स्वाहा ॐ महापद्माटवी संस्थायै स्वाहा ॐ कदम्बवनवासिन्यै स्वाहा ॐ सुधासागर मध्यस्थायै स्वाहा ॐ कामाक्ष्यै स्वाहा ॐ कामदायिन्यै स्वाहा ॐ देवर्षि गणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै स्वाहा ॐ भण्डासुरवधोधुक्त शक्तिसेना समन्वितायै स्वाहा ॐ सम्पत्करी समारूढ सिन्दूर व्रज सेवितायै स्वाहा ॐ अश्वारूढधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै स्वाहा ॐ चक्रराज रथारूढ सर्वायुध परिष्कृतायै स्वाहा ॐ गेय चक्र रथारूढ मन्त्रिणी परिसेवितायै स्वाहा ॐ किरिचक्र रथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृतायै स्वाहा ॐ ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्नि प्राकार मध्यगायै स्वाहा ॐ भण्ड सैन्य वधोधुक्त शक्ति विक्रम हर्षितायै स्वाहा ॐ नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुकायै स्वाहा ॐ भण्डपुत्र वधोधुक्त बाला विक्रम नन्दितायै स्वाहा ॐ मन्त्रियम्बा विरचित विषङ्ग वदतोषितायै स्वाहा ॐ विशुक्र प्राणहरण वाराहि वीर्यनन्दितायै स्वाहा ॐ कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरायै स्वाहा ॐ महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षितायै स्वाहा ॐ भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिण्ये स्वाहा
ॐ कराङ्गुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृत्ये स्वाहा ॐ महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्ध्यासुर सैनिकाये स्वाहा ॐ कामेश्वरास्त निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यकाये स्वाहा ॐ ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्राधिदेव संस्तुत वैभवाये स्वाहा ॐ हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषध्ये स्वाहा ॐ श्रीमद्भागवत कूटैक स्वरूप मुख पंकजाये स्वाहा ॐ कंठाध कटिपर्यंत मध्य कूट स्वपूर्णिन्ये स्वाहा ॐ शक्ति कूटैक तापन्न कटयुभाग धारिण्ये स्वाहा ॐ मंत्र मंत्रायुनिकाये स्वाहा ॐ मूलकूटत्रय कलेवराये स्वाहा ॐ कुलामृतैक रसिकाये स्वाहा ॐ कुल संकेत पालिन्ये स्वाहा ॐ कुलांगनाये स्वाहा ॐ कुलांतस्थाये स्वाहा ॐ कौलिन्ये स्वाहा ॐ कुलयोगिन्ये स्वाहा ॐ अकुलाये स्वाहा ॐ समयांतस्थाये स्वाहा ॐ समयाचार तत्पराये स्वाहा ॐ मूलाधारे कनिलयाये स्वाहा ॐ ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्ये स्वाहा ॐ मणिपुरान्तरुदिताये स्वाहा ॐ विष्णु ग्रंथि विभेदिन्ये स्वाहा ॐ आज्ञा चक्रान्तरालस्थाये स्वाहा ॐ रुद्र ग्रंथि विभेदिन्ये स्वाहा ॐ सहस्राराम्बुजारूढाये स्वाहा ॐ सुधासारभिवर्षिन्ये स्वाहा ॐ तडिल्लता समरुचे स्वाहा ॐ षट्चक्रोपरि संस्थिताये स्वाहा ॐ महाशक्ते स्वाहा ॐ कुण्डलिन्ये स्वाहा ॐ विसतन्तु तनीयस्ये स्वाहा ॐ भवान्ये स्वाहा ॐ भावनागम्याये स्वाहा ॐ भवारण्यकुठारिकाये स्वाहा ॐ भद्रप्रियाये स्वाहा ॐ भद्रमूर्तये स्वाहा ॐ भक्त सौभाग्यदायिन्ये स्वाहा ॐ भक्तिप्रियाये स्वाहा ॐ भक्तिगम्याये स्वाहा ॐ भक्तिवश्याये स्वाहा ॐ भयापहाये स्वाहा ॐ शाम्भव्ये स्वाहा ॐ शारदाराध्याये स्वाहा ॐ शर्वाण्ये स्वाहा ॐ शर्वदायिन्ये स्वाहा ॐ शाङ्कर्ये स्वाहा ॐ श्रीकर्ये स्वाहा ॐ साध्वे स्वाहा ॐ शरच्चन्द्रनिभाननाये स्वाहा ॐ शातुदर्ये स्वाहा ॐ शान्तिमत्ये स्वाहा ॐ निराधाराय स्वाहा ॐ निरञ्जनाय स्वाहा ॐ निर्लेपाय स्वाहा ॐ निर्मलाय स्वाहा ॐ नित्याय स्वाहा ॐ निराकाराय स्वाहा ॐ निराकुलाय स्वाहा ॐ निर्गुणाय स्वाहा ॐ निष्कलाय स्वाहा ॐ शान्ताय स्वाहा ॐ निष्कामाय स्वाहा ॐ निरुपल्लवाय स्वाहा ॐ नित्यमुक्ताय स्वाहा ॐ निर्विकाराय स्वाहा ॐ निष्प्रपञ्चाय स्वाहा ॐ निराश्रयाय स्वाहा ॐ नित्यशुद्धाय स्वाहा ॐ नित्यबुद्धाय स्वाहा ॐ निरवध्याय स्वाहा ॐ निरन्तराय स्वाहा ॐ निष्कारणाय स्वाहा ॐ निष्कलङ्काय स्वाहा ॐ निरुपाधये स्वाहा ॐ निरीश्वराय स्वाहा ॐ नीलागाय स्वाहा ॐ रागमनथन्ये स्वाहा ॐ निर्मदाय स्वाहा ॐ मदनाशिन्ये स्वाहा ॐ निश्चिन्ताय स्वाहा ॐ निरहङ्काराय स्वाहा ॐ निर्मोहाय स्वाहा ॐ मोहनाशिन्ये स्वाहा ॐ निर्मयाय स्वाहा ॐ ममताहन्त्रे स्वाहा ॐ निष्पापाय स्वाहा ॐ पापनाशिन्ये स्वाहा ॐ निष्क्रोधाय स्वाहा ॐ क्रोधशमन्ये स्वाहा ॐ निर्लोभाय स्वाहा ॐ लोभनाशिन्ये स्वाहा ॐ निसंशयाय स्वाहा ॐ संशयज्ञे स्वाहा ॐ निर्भवाय स्वाहा ॐ भवनाशिन्ये स्वाहा ॐ निर्विकल्पाय स्वाहा ॐ निराबाधाय स्वाहा ॐ निर्भेदाय स्वाहा ॐ भेदनाशिन्ये स्वाहा ॐ निर्नाशाय स्वाहा ॐ मृत्युमथन्ये स्वाहा ॐ निष्क्रियाय स्वाहा ॐ निष्परिग्रहाय स्वाहा ॐ निस्तुलाय स्वाहा ॐ नीलचिकुराय स्वाहा ॐ निरपायाय स्वाहा ॐ निरत्ययाय स्वाहा ॐ दुर्लभाय स्वाहा ॐ दुर्गमाय स्वाहा ॐ दुर्गाय स्वाहा ॐ दुःखहन्त्रे स्वाहा
ॐ सुखप्रदाये स्वाहा ॐ दुष्टदूराय स्वाहा ॐ दुराचारशमन्ये स्वाहा ॐ दोषवर्जिताय स्वाहा ॐ सर्वज्ञाय स्वाहा ॐ सान्द्रकरुणाय स्वाहा ॐ समानाधिकवर्जिताय स्वाहा ॐ सर्वशक्तिमये स्वाहा ॐ सर्वमङ्गलाय स्वाहा। ॐ सद्गतिप्रदाये स्वाहा ॐ सर्वेश्वरे स्वाहा ॐ सर्वमये स्वाहा ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिणे स्वाहा ॐ सर्वयन्त्रात्मिकाय स्वाहा ॐ सर्वतन्त्ररूपाय स्वाहा ॐ मनोन्मये स्वाहा ॐ माहेश्वर्ये स्वाहा ॐ महादेव्यै स्वाहा ॐ महालक्ष्मी स्वाहा ॐ मृडप्रियाय स्वाहा ॐ महारूपाय स्वाहा ॐ महापूज्याय स्वाहा ॐ महापातकनाशिन्ये स्वाहा ॐ महामायाय स्वाहा ॐ महासत्त्वाय स्वाहा ॐ महाशक्त्यै स्वाहा ॐ महारत्ये स्वाहा ॐ महाभोगाय स्वाहा ॐ महेश्वर्याय स्वाहा ॐ महावीर्याय स्वाहा ॐ महाबलाय स्वाहा ॐ महाबुद्धये स्वाहा ॐ महासिद्धये स्वाहा ॐ महायोगेश्वरेश्वर्ये स्वाहा ॐ महातन्त्राय स्वाहा ॐ महामन्त्राय स्वाहा ॐ महायन्त्राय स्वाहा ॐ महासनाय स्वाहा ॐ महायागक्रमाराध्याय स्वाहा ॐ महाभैरवपूजिताय स्वाहा ॐ महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिण्ये स्वाहा ॐ महाकामेश महिष्ये स्वाहा ॐ महात्रिपुरसुन्दर्ये स्वाहा ॐ चतुष्षष्टि स्वाहा ॐ चतुष्षष्टि कलामये स्वाहा ॐ महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविताय स्वाहा ॐ मधुविद्यायै स्वाहा ॐ चन्द्रविद्यायै स्वाहा ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगायै स्वाहा ॐ चारुरूपाय स्वाहा ॐ चारुहासाय स्वाहा ॐ चारुचन्द्रकलाधराय स्वाहा ॐ चराचर जगन्नाथाय स्वाहा ॐ चक्रराजनिकेतनाय स्वाहा ॐ पार्वत्यै स्वाहा ॐ पद्मनयनाय स्वाहा ॐ पद्मरागसमप्रभायै स्वाहा ॐ पञ्चप्रेतासनासीनाय स्वाहा ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्ये स्वाहा ॐ चिन्मये स्वाहा ॐ परमानन्दाय स्वाहा ॐ विज्ञानघनरूपिण्ये स्वाहा ॐ ध्यानध्यातृध्येयरूपाय स्वाहा ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय स्वाहा ॐ विश्वरूपाय स्वाहा ॐ जागरिण्ये स्वाहा ॐ स्वपत्ने स्वाहा ॐ तेजसात्मिकाय स्वाहा ॐ सुप्ताय स्वाहा ॐ प्राज्ञात्मिकाय स्वाहा ॐ तुर्याय स्वाहा ॐ सर्वावस्था विवर्जिताय स्वाहा ॐ सृष्टिकर्त्यै स्वाहा ॐ ब्रह्मरूपाय स्वाहा ॐ गोप्त्रे स्वाहा ॐ गोविन्दरूपिण्ये स्वाहा ॐ संहारिण्ये स्वाहा ॐ रुद्रप्रियाय स्वाहा ॐ तिरोधानकर्ये स्वाहा ॐ ईश्वर्ये स्वाहा ॐ सदाशिवाय स्वाहा ॐ अनुग्रहदाय स्वाहा ॐ पञ्चकृतपरायणाय स्वाहा ॐ भानुमण्डलमध्यस्थाय स्वाहा ॐ भैरव्ये स्वाहा ॐ भगमालिन्ये स्वाहा ॐ पद्मासनाय स्वाहा ॐ भगवते स्वाहा ॐ पद्मनाभ सहोदर्ये स्वाहा ॐ उन्मेष निमेषोत्पन्न विपन्न भुवनावल्ये स्वाहा ॐ सहस्रशीर्षवदनाय स्वाहा ॐ सहस्राक्षे स्वाहा ॐ सहस्रपदे स्वाहा ॐ आब्रह्मकीटजनन्ये स्वाहा ॐ वर्णाश्रमविधायिने स्वाहा ॐ निजाज्ञारूप निगमाय स्वाहा ॐ पुण्यफलप्रदाय स्वाहा ॐ श्रुतिसीमन्त सिन्दूरीकृत पादाब्जजूलिकाय स्वाहा ॐ सकलागमन सन्दोह शुक्ति संपुट मौक्तिकाय स्वाहा ॐ पुरुषार्थप्रदाय स्वाहा ॐ पूर्णाय स्वाहा ॐ भोगिन्ये स्वाहा ॐ भुवनेश्वर्ये स्वाहा ॐ अम्बिकाय स्वाहा ॐ अनादिनिधनाय स्वाहा ॐ हरिब्रह्मेन्द्र सेविताय स्वाहा ॐ नारायण्ये स्वाहा ॐ नादरूपाय स्वाहा ॐ नामरूप विवर्जिताय स्वाहा। ॐ ह्रींकार्ये स्वाहा ॐ ह्रीमत्ये स्वाहा ॐ हृद्याय स्वाहा ॐ हेयोपादेववर्जिताय स्वाहा ॐ राजराजार्चिताय स्वाहा ॐ राज्ञै स्वाहा ॐ रम्याय स्वाहा ॐ राजीवलोचनाय स्वाहा ॐ रञ्जन्ये स्वाहा
ॐ रमण्ये स्वाहा ॐ रस्यायै स्वाहा ॐ रणकिङ्किणी मेखलायै स्वाहा ॐ रमायै स्वाहा ॐ राकेन्दुवदनायै स्वाहा ॐ रतिरूपायै स्वाहा ॐ रतिप्रियायै स्वाहा ॐ रक्षाकर्यै स्वाहा ॐ राक्षसग्ने स्वाहा ॐ रामाय स्वाहा ॐ रमणलम्पटाय स्वाहा ॐ काम्याय स्वाहा ॐ कामकलारूपाय स्वाहा ॐ कदम्बकुसुमाप्रियाय स्वाहा ॐ कल्याणे स्वाहा ॐ जगतिकन्दाय स्वाहा ॐ करुणारससागराय स्वाहा ॐ कलावत्यै स्वाहा ॐ कलालापाय स्वाहा ॐ कान्ताय स्वाहा ॐ कादम्बरी प्रियाय स्वाहा ॐ वरदाय स्वाहा ॐ वामनयाय स्वाहा ॐ वारुणी मदविमलाय स्वाहा ॐ विश्वाधिकाय स्वाहा ॐ वेदवेद्याय स्वाहा ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्ये स्वाहा ॐ विद्यात्रे स्वाहा ॐ वेदजनन्ये स्वाहा ॐ विष्णुमायाय स्वाहा ॐ विलासिन्ये स्वाहा ॐ क्षेत्रस्वरूपाय स्वाहा ॐ क्षेत्रस्ये स्वाहा ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्ये स्वाहा ॐ क्षयवृद्धिनिर्मुक्ताय स्वाहा ॐ क्षेत्रपालनसमर्चिताय स्वाहा ॐ विजयाय स्वाहा ॐ विमलाय स्वाहा ॐ वन्द्याय स्वाहा ॐ वन्दारुजनवत्सलाय स्वाहा ॐ वाग्वादिन्ये स्वाहा ॐ वामकेशे स्वाहा ॐ वह्निमण्डलवासिन्ये स्वाहा ॐ भक्तिमतकल्पलतिकाय स्वाहा ॐ पशुपाशविमोचिन्ये स्वाहा ॐ समृताशोषपाशदाय स्वाहा ॐ सदाचारप्रवर्तिकाय स्वाहा ॐ तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाराधनचन्द्रिकाय स्वाहा ॐ तरुण्ये स्वाहा ॐ तापसाराध्याय स्वाहा ॐ तनुमध्याय स्वाहा ॐ तमोपहाय स्वाहा ॐ चित्ते स्वाहा ॐ तत्पदलक्ष्यार्थाय स्वाहा ॐ चिदेकरस्वरूपिण्ये स्वाहा ॐ स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्तते स्वाहा ॐ पराये स्वाहा ॐ प्रत्यक्षतिरूपाय स्वाहा ॐ पश्यन्ते स्वाहा ॐ परदेवताय स्वाहा ॐ मध्याय स्वाहा ॐ वैखरीरूपाय स्वाहा ॐ भक्तमानसंहंसिकाय स्वाहा ॐ कामेश्वरप्राणनाद्ये स्वाहा ॐ कृतज्ञाय स्वाहा ॐ कामपूजिताय स्वाहा ॐ शृङ्गाररससम्पूर्णाय स्वाहा ॐ जयाय स्वाहा ॐ जालन्धरस्थिताय स्वाहा ॐ ओड्यानपीठनिलयाय स्वाहा ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्ये स्वाहा ॐ रहोयागक्रमाराध्याय स्वाहा ॐ रहस्तर्पणतपिताय स्वाहा ॐ सद्यप्रसादिन्ये स्वाहा ॐ विश्वसाक्षिण्ये स्वाहा ॐ साक्षिवर्जिताय स्वाहा ॐ षडङ्गदेवतायुक्ताय स्वाहा ॐ षाड्गुण्यपरिपूरिताय स्वाहा ॐ नित्यक्लिन्नाय स्वाहा ॐ निरुपमाय स्वाहा ॐ निर्वाणसुखदायिने स्वाहा ॐ नित्याषोडशिकारूपाय स्वाहा ॐ श्रीकण्ठार्धशालिने स्वाहा ॐ प्रभावत्ये स्वाहा ॐ प्रभारूपाय स्वाहा ॐ प्रसिद्धाय स्वाहा ॐ परमैश्वर्यै स्वाहा ॐ मूलप्रकृत्यै स्वाहा ॐ अव्यक्ताय स्वाहा ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणे स्वाहा ॐ व्यापिन्ये स्वाहा। ॐ विविधाकाराय स्वाहा ॐ विद्यास्वरूपिणे स्वाहा ॐ महाकामेश नयन कुमुदालादकौमुद्ये स्वाहा ॐ भक्तहादतमो भेद भानुमद्भानुसन्तते स्वाहा ॐ शिवदूते स्वाहा ॐ शिवाराध्याय स्वाहा ॐ शिवमूर्ते स्वाहा ॐ शिवङ्कर्ये स्वाहा ॐ शिवप्रियाय स्वाहा ॐ शिवपराय स्वाहा ॐ शिष्टेष्टाय स्वाहा ॐ शिष्टपूजिताय स्वाहा ॐ अप्रमेयाय स्वाहा ॐ स्वप्रकाशाय स्वाहा ॐ मनोवाचामगोचराय स्वाहा ॐ चित्शक्ते स्वाहा ॐ चेतनारूपाय स्वाहा ॐ जडशक्ते स्वाहा ॐ जडात्मिकाय स्वाहा ॐ गायत्रे स्वाहा ॐ व्याहृत्ये स्वाहा ॐ सन्ध्यायै स्वाहा ॐ द्विजवृन्दनिषेवितायै स्वाहा ॐ तत्त्वासनायै स्वाहा ॐ तस्मै स्वाहा ॐ तुभ्यं स्वाहा ॐ अय्ये स्वाहा ॐ पञ्चकोशान्तरस्थितायै स्वाहा
ओम निस्सीम महिम्ने स्वाहा, ओम नित्य यौवनाय स्वाहा, ओम मदशालिन्ये स्वाहा, ओम मदघूर्णित रक्ताक्षय स्वाहा, ओम मदपाटल गंडभुवे स्वाहा, ओम चंदन द्रव दिग्धांगे स्वाहा, ओम चांपेय कुसुम प्रियाय स्वाहा, ओम कुशयाय स्वाहा, ओम कोमलाकाराय स्वाहा, ओम कुरुकुल्लाय स्वाहा, ओम कुलेश्वर्ये स्वाहा, ओम कुलकुंडलालयाय स्वाहा, ओम कौलमार्ग तत्पर सेविताय स्वाहा, ओम कुमार गणनाथांबाय स्वाहा, ओम तुष्टे स्वाहा, ओम पुष्टे स्वाहा, ओम मत्ते स्वाहा, ओम धृत्ये स्वाहा, ओम शांते स्वाहा, ओम स्वस्तिमत्ते स्वाहा, ओम कांते स्वाहा, ओम नंदिन्ये स्वाहा, ओम विघ्ननाशिन्ये स्वाहा, ओम तेजोभत्ते स्वाहा, ओम त्रिनयनाय स्वाहा, ओम लोलाक्षि कामरूपिण्ये स्वाहा, ओम मालिन्ये स्वाहा, ओम हंसिन्ये स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, ओम मलयाचलवासिन्ये स्वाहा, ओम सुमुखे स्वाहा, ओम नलिन्ये स्वाहा, ओम सुभ्रुवे स्वाहा, ओम शोभनाय स्वाहा, ओम सुरनायिकाय स्वाहा, ओम कालकंठे स्वाहा, ओम कांतिमत्ये स्वाहा, ओम शोभिन्ये स्वाहा, ओम सूक्ष्मरूपिण्ये स्वाहा, ओम वज्रेश्वर्ये स्वाहा, ओम वामदेव्ये स्वाहा, ओम वयोवस्था विवर्जिताय स्वाहा, ओम सिद्धेश्वर्ये स्वाहा, ओम सिद्ध विद्याये स्वाहा, ओम सिद्धमात्रे स्वाहा, ओम यशस्वन्ये स्वाहा, ओम विशुद्धि चक्र निलयाय स्वाहा, ओम आरक्त वर्णाय स्वाहा, ओम त्रिलोचनाय स्वाहा, ओम खड्वांगादि प्रहरणाय स्वाहा, ओम वदनैक समस्ताय स्वाहा, ओम पायासान्न प्रियाय स्वाहा, ओम त्वत्स्थाय स्वाहा, ओम पशुलोक भयंकर्ये स्वाहा, ओम अमृतादि महाशक्ति संवृताय स्वाहा, ओम डाकिनीश्वर्ये स्वाहा, ओम अनाहताब्जनिलयाय स्वाहा, ओम श्यामभाय स्वाहा, ओम वदनद्वयाय स्वाहा, ओम दंष्ट्रोज्वलाय स्वाहा, ओम अक्षमालाधिराय स्वाहा, ओम रुधिर संस्थिताय स्वाहा, ओम कालरात्र्यादिशक्त्योद्भवताय स्वाहा, ओम स्निग्धोदन प्रियाय स्वाहा, ओम महावीरेन्द्र वरदाय स्वाहा, ओम राकिण्याम्बा स्वरूपिण्ये स्वाहा, ओम मणिपूराब्ज निलयाय स्वाहा, ओम वदनत्रय संयुक्ताय स्वाहा, ओम वज्राधिकायुधोपेताय स्वाहा, ओम डामर्यादिभिराकृताय स्वाहा, ओम रक्तवर्णाय स्वाहा, ओम मांसनिष्ठाय स्वाहा। ओम गुडान प्रीतमानसाय स्वाहा, ओम समस्त भक्त सुखदाय स्वाहा, ओम लाकिन्यम्बा स्वरूपिण्ये स्वाहा, ओम स्वाधिष्ठानाम्बुजगताय स्वाहा, ओम चतुर्वक्त मनोहराय स्वाहा, ओम शूलाद्यायुध संपन्नाय स्वाहा, ओम पीतवर्णाय स्वाहा, ओम अतिगर्विताय स्वाहा, ओम मेदुनिष्ठाय स्वाहा, ओम मधुप्रीताय स्वाहा, ओम बंदिन्यादि समन्विताय स्वाहा, ओम दध्यानासक्तहृदयाय स्वाहा, ओम काकिनी रूपधारिण्ये स्वाहा, ओम मूलाधाराम्बुजारूढाय स्वाहा, ओम पंचवक्त्राय स्वाहा, ओम अस्ति संस्थिताय स्वाहा, ओम अंकुशादि प्रहरणाय स्वाहा, ओम वरदादि निषेविताय स्वाहा, ओम उद्गोदनासक्त चित्ताय स्वाहा, ओम शाकिन्यम्बा स्वरूपिण्ये स्वाहा, ओम आज्ञा चक्राब्ज निलयाय स्वाहा, ओम शुक्लवर्णाय स्वाहा, ओम षडाननाय स्वाहा, ओम मज्जा संस्थाय स्वाहा, ओम हंसवती मुख्य शक्ति समन्विताय स्वाहा, ओम हरिद्रानेकरसकाय स्वाहा, ओम हाकिनी रूपधारिण्ये स्वाहा, ओम सहस्रदल पद्मस्थाय स्वाहा, ओम सर्ववर्णोपशोभिताय स्वाहा, ओम सर्वायुधधराय स्वाहा, ओम शुक्ल संस्थिताय स्वाहा, ओम सर्वतोमुख्ये स्वाहा, ओम सर्वोदन प्रीत चित्ताय स्वाहा, ओम आत्मनिम्बा स्वरूपिण्ये स्वाहा, ओम स्वाहाय स्वाहा, ओम स्वधाय स्वाहा, ओम अमत्ये स्वाहा, ओम मेधाय स्वाहा, ओम श्रुत्ये स्वाहा, ओम स्मृत्ये स्वाहा,
ॐ अनुत्तमायै स्वाहा ॐ पुण्यकीर्ते स्वाहा ॐ पुण्यलभ्यायै स्वाहा ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै स्वाहा ॐ पुलोमजार्जितायै स्वाहा ॐ बन्धमोचन्ये स्वाहा ॐ बन्धुरालकायै स्वाहा ॐ विमर्शरूपिण्ये स्वाहा ॐ विद्यायै स्वाहा ॐ वेदादिगजगत्प्रसूवे स्वाहा ॐ सर्वव्याधिप्रशमन्ये स्वाहा ॐ सर्वमृत्युनिवारण्ये स्वाहा ॐ अग्रगण्यायै स्वाहा ॐ अचिन्त्यरूपायै स्वाहा ॐ कलिकल्मषनाशिन्ये स्वाहा ॐ कात्यायन्ये स्वाहा ॐ कालहन्त्रे स्वाहा ॐ कमलाक्षनिषेवितायै स्वाहा ॐ ताम्बूलपूरितमुखे स्वाहा ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै स्वाहा ॐ मृगाक्षे स्वाहा ॐ मोहिन्ये स्वाहा ॐ मुख्यायै स्वाहा ॐ मृडान्ये स्वाहा ॐ मित्ररूपिण्ये स्वाहा ॐ नित्यतृप्तायै स्वाहा ॐ भक्तनिधये स्वाहा ॐ नियन्त्रे स्वाहा ॐ निखिलेश्वर्ये स्वाहा ॐ मैत्रादिवासलालभ्यायै स्वाहा ॐ महाप्रलयसाक्षिण्ये स्वाहा ॐ परस्य शक्त्यै स्वाहा ॐ परायै निष्ठायै स्वाहा ॐ प्रज्ञानघनरूपिण्ये स्वाहा ॐ माध्वीपानालसायै स्वाहा ॐ मत्तायै स्वाहा ॐ मातृकावर्णरूपिण्ये स्वाहा ॐ महाकैलासनिलयायै स्वाहा ॐ मृणालमृदुदोर्लतायै स्वाहा ॐ महनीयायै स्वाहा ॐ दयामूर्ते स्वाहा ॐ महासाम्राज्यशालिन्ये स्वाहा ॐ आत्मविद्यायै स्वाहा ॐ महाविद्यायै स्वाहा ॐ श्रीविद्यायै स्वाहा ॐ कामसेवितायै स्वाहा ॐ श्री षोडशाक्षरी विद्यायै स्वाहा ॐ श्रीकुटायै स्वाहा ॐ कामकोटिकायै स्वाहा ॐ कटाक्षकिङ्किरी भूतकमलाकोटिसेवितायै स्वाहा ॐ शिरस्थितायै स्वाहा ॐ चन्द्रनिभायै स्वाहा ॐ भालस्थायै स्वाहा ॐ इन्द्रधनुप्रभायै स्वाहा ॐ हृदयस्थायै स्वाहा ॐ रविप्रख्यायै स्वाहा ॐ त्रिकोणान्तरदीपिकायै स्वाहा ॐ दाक्षायण्ये स्वाहा ॐ दैत्यहन्त्रे स्वाहा ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्ये स्वाहा। ॐ दरान्दोलितदीर्घाक्षे स्वाहा ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुखे स्वाहा ॐ गुरुमूर्तये स्वाहा ॐ गुणनिधये स्वाहा ॐ गोमात्रे स्वाहा ॐ गुहजन्मभुवे स्वाहा ॐ देवेश्वरै स्वाहा ॐ दण्डनीतिस्थायै स्वाहा ॐ दहराकाशरूपिण्ये स्वाहा ॐ प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजितायै स्वाहा ॐ कलात्मिकायै स्वाहा ॐ कलानाथायै स्वाहा ॐ काव्यालापविदोदिन्ये स्वाहा ॐ सचामररमावाणि सव्यदक्षिणसेवितायै स्वाहा ॐ आदिशक्त्यै स्वाहा ॐ अमेयायै स्वाहा ॐ आत्मने स्वाहा ॐ परमायै स्वाहा ॐ पावनाकृतये स्वाहा ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्ये स्वाहा ॐ दिव्यविग्रहाय स्वाहा ॐ क्लींकार्ये स्वाहा ॐ केवलाय स्वाहा ॐ गुह्याय स्वाहा ॐ कैवल्यपददायिन्ये स्वाहा ॐ त्रिपुराय स्वाहा ॐ त्रिजगद्वन्द्याय स्वाहा ॐ त्रिमूर्तये स्वाहा ॐ त्रिदशेश्वर्ये स्वाहा ॐ त्र्यक्षये स्वाहा ॐ दिव्यगन्धाढ्याय स्वाहा ॐ सिन्दूरतिलकाञ्चाय स्वाहा ॐ उमाय स्वाहा ॐ शैलेन्द्रतनयाय स्वाहा ॐ गौर्यै स्वाहा ॐ गन्धर्वसेवितायै स्वाहा ॐ विश्वगर्भाय स्वाहा ॐ सर्वगर्भाय स्वाहा ॐ अवरदाय स्वाहा ॐ वागधीश्वर्ये स्वाहा ॐ ध्यानगम्याय स्वाहा ॐ अपरिच्छेद्याय स्वाहा ॐ ज्ञानदाय स्वाहा ॐ ज्ञानविग्रहाय स्वाहा ॐ सर्ववेदान्तसंवेद्याय स्वाहा ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्ये स्वाहा ॐ लोपामुद्रार्चिताय स्वाहा ॐ लीलाक्लिप्तब्रह्माण्डमण्डलाय स्वाहा ॐ अदृश्याय स्वाहा ॐ दृश्यरहिताय स्वाहा ॐ विज्ञात्रे स्वाहा ॐ वेद्यवर्जिताय स्वाहा ॐ योगिन्ये स्वाहा ॐ योगदाय स्वाहा ॐ योग्याय स्वाहा ॐ योगानन्दाय स्वाहा ॐ युगधराय स्वाहा
ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिण्ये स्वाहा ओम सर्वाधाराय स्वाहा ओम सुप्रतिष्ठाय स्वाहा ओम सदसद्रूप धारिणे स्वाहा ओम अष्टमूर्ते स्वाहा ओम अजाजेत्रे स्वाहा ओम लोकयात्रा विदायिने स्वाहा ओम एकाकिन्ने स्वाहा ओम भूमरूपाय स्वाहा ओम निर्द्वैताय स्वाहा ओम द्वैतवर्जिताय स्वाहा ओम अन्नदाय स्वाहा ओम वसुदाय स्वाहा ओम वृद्ध्याय स्वाहा ओम ब्रह्मात्मैक स्वरूपिण्ये स्वाहा ओम बृहत्ये स्वाहा ओम ब्राह्मण्ये स्वाहा ओम ब्राह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मानंदाय स्वाहा ओम बलिप्रियाय स्वाहा ओम भाषारूपाय स्वाहा ओम बृहत्सेनाय स्वाहा ओम भाव विवर्जिताय स्वाहा ओम सुखाराध्याय स्वाहा ओम शुभकर्ये स्वाहा ओम शोभनाय सुलभाय गत्ये स्वाहा ओम राजराजेश्वर्ये स्वाहा ओम राजदायिन्ये स्वाहा ओम राज्यवल्लभाय स्वाहा ओम राजकृपाय स्वाहा ओम राजपीठ निवेशिताय स्वाहा ओम राजलक्ष्मी स्वाहा ओम कोशनाथाय स्वाहा ओम चतुरंग बलेश्वर्ये स्वाहा ओम साम्राज्यदायिन्ये स्वाहा ओम सत्यसंधाय स्वाहा ओम सागर मेखलाय स्वाहा ओम दीक्षिताय स्वाहा ओम दैत्य शमन्ये स्वाहा ओम सर्वलोक वशंकर्ये स्वाहा ओम सर्वार्थदात्रे स्वाहा ओम सावित्रे स्वाहा ओम सच्चिदानंद रूपिण्ये स्वाहा। ओम देशकाला परिच्छिन्नाय स्वाहा ओम सर्वगाये स्वाहा ओम सर्वमोहिन्ये स्वाहा ओम सरस्वत्ये स्वाहा ओम शास्त्रमये स्वाहा ओम गुहाम्बाये स्वाहा ओम गुह्यरूपिण्ये स्वाहा ओम सर्वोपाधि विनिर्मुक्ताय स्वाहा ओम सदाशिवपतिव्रताय स्वाहा ओम संप्रदायेश्वर्ये स्वाहा ओम साधुने स्वाहा ओम ऐ स्वाहा ओम गुरुमंडल रूपिण्ये स्वाहा ओम कुलोत्तीर्णाय स्वाहा ओम भगाराध्याय स्वाहा ओम मायाय स्वाहा ओम मधुमत्ये स्वाहा ओम मह्ये स्वाहा ओम गणाम्बाय स्वाहा ओम गुह्यकाराध्याय स्वाहा ओम कोमलांगे स्वाहा ओम गुरुप्रियाय स्वाहा ओम स्वतंत्राय स्वाहा ओम सर्वतंत्रेश्यै स्वाहा ओम दक्षिणामूर्ति रूपिण्ये स्वाहा ओम सनकादि समाराध्याय स्वाहा ओम शिवज्ञान प्रदायिने स्वाहा ओम चित्कलाय स्वाहा ओम आनंद कलिकाय स्वाहा ओम प्रेम रूपाय स्वाहा ओम प्रियंकये स्वाहा ओम नाम पारायण प्रीताय स्वाहा ओम नंदि विद्याय स्वाहा ओम नटेश्वर्ये स्वाहा ओम विद्या जगदश्चिताय स्वाहा ओम मुक्तिदाय स्वाहा ओम मुक्ति रूपिण्ये स्वाहा ओम लास्य प्रियाय स्वाहा ओम लयकर्ये स्वाहा ओम लज्जाय स्वाहा ओम ब्रह्मादिवंदिताय स्वाहा ओम भवदावृष्टे स्वाहा ओम पापारण्य दवानलाय स्वाहा ओम दौर्भाग्य तूलवातुलाय स्वाहा ओम जराध्वांतर विप्रभाय स्वाहा ओम भाग्याब्ध चंद्रिकाय स्वाहा ओम भक्त चित्ते घना घनाय स्वाहा ओम रोग पर्वत दंभोलये स्वाहा ओम मृत्युदारु कुठारिकाय स्वाहा ओम महेश्वर्ये स्वाहा ओम महाकाले स्वाहा ओम महाग्रासाय स्वाहा ओम आशनाय स्वाहा ओम अपर्णाय स्वाहा ओम चंडिकाय स्वाहा ओम चंडमुंडासुर निशूदिने स्वाहा ओम शराशरात्मिकाय स्वाहा ओम सर्वलोकेशे स्वाहा ओम विश्वधारिणे स्वाहा ओम त्रिवर्गदात्रे स्वाहा ओम शुभगाय स्वाहा ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम त्रिगुणात्मिकाय स्वाहा ओम स्वर्गापवर्गदाय स्वाहा ओम शुद्धाय स्वाहा ओम जपा पुष्प निभाकृतये स्वाहा ओम ओजोवत्ये स्वाहा ओम दुतिधराय स्वाहा ओम यज्ञ रूपाय स्वाहा ओम प्रियव्रताय स्वाहा ओम दुराराध्याय स्वाहा ओम दुराधर्षाय स्वाहा ओम पाटली कुसुम प्रियाय स्वाहा ओम महत्ते स्वाहा ओम मेरुनिलयाय स्वाहा ओम मंदार कुसुम प्रियाय स्वाहा ओम वीराराध्याय स्वाहा ओम विराट रूपाय स्वाहा ओम विरजसे स्वाहा ओम विश्वतोमुखे स्वाहा ओम प्रत्यग रूपाय स्वाहा ओम पराकाशाय स्वाहा ओम प्राणदाय स्वाहा
स्वाहा ओम प्राणरूपिण्ये स्वाहा ओम मार्तंड भैरवाराध्याये स्वाहा ओम मंत्रिणी न्यस्तराज्यदुते स्वाहा ओम त्रिपुरेश्ये स्वाहा ओम जयसेनाय स्वाहा ओम निसिंहण्याय स्वाहा ओम परापराय स्वाहा ओम सत्य ज्ञान आनंद रूपाय स्वाहा ओम सामरस्य परायणाय स्वाहा ओम कपर्दिन्ये स्वाहा ओम कलामालाय स्वाहा ओम कामधुहे स्वाहा ओम कामरूपिण्ये स्वाहा ओम कलानिधये स्वाहा ओम काव्यकलाय स्वाहा ओम रसज्ञाय स्वाहा ओम रसशेवधये स्वाहा। ओम पुष्टाय स्वाहा ओम पुरातनाय स्वाहा ओम पूज्याय स्वाहा ओम पुष्कराय स्वाहा ओम पुष्करेक्षणाय स्वाहा ओम परस्मै ज्योतिषे स्वाहा ओम परस्मै धाम्ने स्वाहा ओम परमाणवे स्वाहा ओम मलात्पराय स्वाहा ओम पाशहस्ताय स्वाहा ओम पाशहन्त्रे स्वाहा ओम परमंत्र विभेदिन्ये स्वाहा ओम मूर्ताय स्वाहा ओम अमूर्ताय स्वाहा ओम अनित्यतृप्ताय स्वाहा ओम मुनिमानसंहसिकाय स्वाहा ओम सत्यव्रताय स्वाहा ओम सत्यरूपाय स्वाहा ओम सर्वान्तर्यामिन्ये स्वाहा ओम सत्ये स्वाहा ओम ब्रह्माण्ये स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम जनन्ये स्वाहा ओम बहुरूपाय स्वाहा ओम बुधार्चिताय स्वाहा ओम प्रसवित्रे स्वाहा ओम प्रचंडाय स्वाहा ओम आज्ञाय स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय स्वाहा ओम प्रकटाकृतये स्वाहा ओम प्राणेश्वर्ये स्वाहा ओम प्राणदात्रे स्वाहा ओम पंचाशत पीठ रूपिण्ये स्वाहा ओम विशृंखलाय स्वाहा ओम विविक्तस्थाय स्वाहा ओम वीरमात्रे स्वाहा ओम व्यत्प्रसुवे स्वाहा ओम मुकुंदाय स्वाहा ओम मुक्तिनिलयाय स्वाहा ओम मूल विग्रह रूपिण्ये स्वाहा ओम भावज्ञाय स्वाहा ओम भवरोगग्ने स्वाहा ओम भवचक्र प्रवर्तिन्ये स्वाहा ओम छंदसाराय स्वाहा ओम शास्त्रसाराय स्वाहा ओम मंत्रसाराय स्वाहा ओम तलोदर्ये स्वाहा ओम उदारकीर्तये स्वाहा ओम उद्दाम वैभवाय स्वाहा ओम वर्णरूपिण्ये स्वाहा ओम जन्म मृत्यु जात प्रजन विश्रांतिदायिन्ये स्वाहा ओम सर्वोपनिषदुद्घुष्टाय स्वाहा ओम शांतितीत कलात्मिकाय स्वाहा ओम गंभीराय स्वाहा ओम गगनांतस्थाय स्वाहा ओम गर्विताय स्वाहा ओम गानलोलुपाय स्वाहा ओम कल्पनारहिताय स्वाहा ओम काष्ठाय स्वाहा ओम अकांताय स्वाहा ओम कांतात विग्रहाय स्वाहा ओम कार्य कारण निर्मुक्ताय स्वाहा ओम कामकेलि तरंगिताय स्वाहा ओम कनक कनकाटंकाय स्वाहा ओम लीला विग्रह धारिण्ये स्वाहा ओम अजाय स्वाहा ओम क्षय विनिर्मुक्ताय स्वाहा ओम विद्याय स्वाहा ओम क्षिप्र प्रसादिन्ये स्वाहा ओम अंतर्मुख समाराध्याय स्वाहा ओम बहिर्मुख सुदुर्लभाय स्वाहा ओम त्रय्ये स्वाहा ओम त्रिवर्ग निलयाय स्वाहा ओम त्रिस्थाये स्वाहा ओम त्रिपुरमालिन्ये स्वाहा ओम निरामयाय स्वाहा ओम निरालंबाय स्वाहा ओम स्वात्मारामाय स्वाहा ओम सुधाश्रुत्ये स्वाहा ओम संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिताय स्वाहा ओम यज्ञ प्रियाय स्वाहा ओम यज्ञ कर्त्रे स्वाहा ओम यजमान स्वरूपिण्ये स्वाहा ओम धर्माधाराय स्वाहा ओम धनाध्यक्षाय स्वाहा ओम धन धान्य विवर्धन्ये स्वाहा ओम विप्रप्रियाय स्वाहा ओम विप्ररूपाय स्वाहा ओम विश्वभ्रमणकारिण्ये स्वाहा ओम विश्वग्रासाय स्वाहा ओम विद्रुमाभाय स्वाहा ओम वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरूपिण्ये स्वाहा ओम अयोन्ये स्वाहा ओम योनिनिलयाय स्वाहा ओम कूटस्थाय स्वाहा ओम कुलरूपिण्ये स्वाहा ओम वीरगोष्ठी प्रियाय स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम नैष्कर्म्याय स्वाहा। ओम नादरूपिण्ये स्वाहा ओम विज्ञानकलनाय स्वाहा ओम कल्याय स्वाहा ओम विदग्धाय स्वाहा ओम वैद्यवासनाय स्वाहा ओम तत्वाधिकाय स्वाहा
ओम तत्वमये स्वाहा ओम तत्वमर्थ स्वरूपिण्ये स्वाहा ओम सामगान प्रियाये स्वाहा ओम सौम्याये स्वाहा ओम सदाशिव कुटुंबिन्ये स्वाहा ओम सव्याप सव्यमागस्थाये स्वाहा ओम सर्वापद निवारिण्ये स्वाहा ओम स्वस्थाये स्वाहा ओम स्वभाव मधुराये स्वाहा ओम धीराये स्वाहा ओम धीर समर्चिताये स्वाहा ओम चैतन्यार्घ्य समाराध्याये स्वाहा ओम चैतन्य कुसुम प्रियाये स्वाहा ओम सदोदिताये स्वाहा ओम सदा तुष्टाये स्वाहा ओम तरुणादित्य पाटलाये स्वाहा ओम दक्षिणाराध्याये स्वाहा ओम धरस्मेर मुखाम्बुजाये स्वाहा ओम कौलिनी केवलाये स्वाहा ओम अनर्घ्य कैवल्य पददायिन्ये स्वाहा ओम स्तोत्र प्रियाये स्वाहा ओम स्तुति मध्ये स्वाहा ओम श्रुति संस्कृत वैभवाये स्वाहा ओम मनस्विन्ये स्वाहा ओम मानवत्ये स्वाहा ओम महेश्ये स्वाहा ओम मंगलाकृतये स्वाहा ओम विश्वमात्रे स्वाहा ओम जगद्धात्रे स्वाहा ओम विशालाक्षे स्वाहा ओम विरागिर्णे स्वाहा ओम प्रगल्भाये स्वाहा ओम परमोदाराये स्वाहा ओम परामोदाये स्वाहा ओम मनोमये स्वाहा ओम व्योमकेशे स्वाहा ओम विमानस्थाये स्वाहा ओम वज्रिणे स्वाहा ओम वामकेश्वर्ये स्वाहा ओम पंचयज्ञ प्रियाये स्वाहा ओम पंचप्रेतमज्जादिशायिन्ये स्वाहा ओम पंचमे स्वाहा ओम पंचभूतेशे स्वाहा ओम पंचसंख्योपचारिण्ये स्वाहा ओम शाश्वते स्वाहा ओम शाश्वतेश्वर्याय स्वाहा ओम शर्मदाये स्वाहा ओम शंभुमोहिन्ये स्वाहा ओम धराये स्वाहा ओम धरसुताये स्वाहा ओम धन्याये स्वाहा ओम धर्मिण्ये स्वाहा ओम धर्मवर्धिन्ये स्वाहा ओम लोकातीताये स्वाहा ओम गुणातीताये स्वाहा ओम सर्वातीताये स्वाहा ओम शमात्मिकाये स्वाहा ओम बन्धूककुसुमप्रख्याये स्वाहा ओम बालाये स्वाहा ओम लीला विनोदिन्ये स्वाहा ओम सुमंगल्ये स्वाहा ओम सुकर्वर्ये स्वाहा ओम शुभेशाढ्याये स्वाहा ओम सुवासिन्ये स्वाहा ओम सुवासिन्यर्चन प्रीताये स्वाहा ओम आशोभनाये स्वाहा ओम शुद्ध मानसाये स्वाहा ओम बिंदु तर्पण संतुष्टाये स्वाहा ओम पूर्वजाये स्वाहा ओम त्रिपुरांबिकाये स्वाहा ओम दशमुद्रा समाराध्याये स्वाहा ओम त्रिपुरा श्रीवचनकरे स्वाहा ओम ज्ञान मुद्राये स्वाहा ओम ज्ञानगम्याये स्वाहा ओम ज्ञानगेय स्वरूपिण्ये स्वाहा ओम योनि मुद्राये स्वाहा ओम त्रिखंडेश्ये स्वाहा ओम त्रिगुणाये स्वाहा ओम अंबाये स्वाहा ओम त्रिकोणगाये स्वाहा ओम अनघाये स्वाहा ओम अद्भुत चारित्राये स्वाहा ओम वांछितार्थ प्रदायिन्ये स्वाहा ओम अभ्यासातिशय ज्ञाताये स्वाहा ओम षड्भावीरूपिणे स्वाहा ओम अव्याज करुणामूर्तये स्वाहा ओम अज्ञान ध्वांत दीपिकाये स्वाहा ओम आबाल गोप विदिताये स्वाहा ओम सर्वानुलंघ्य शासनाय स्वाहा ओम श्री चक्र राजनिलयाय स्वाहा ओम श्रीमत् त्रिपुर सुंदर्ये स्वाहा ओम श्री शिवाय स्वाहा ओम शिव शक्ते रूपिण्ये स्वाहा ओम ललितांबिकाय स्वाहा ओम ललितांबिकाय स्वाहा ओम ललितांबिकाय स्वाहा। ओम शांति 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 हरि ओम। Purnahuti, hands in pranam mudra. Om
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। Pavani, Divya also. जगतो धारिणी माता दुर्गा, जगतो धारिणी माँ। जगतो धारिणी माता दुर्गा, जगतो धारिणी माँ। जगतोद्धारिणी माता दुर्गा, जगतोद्धारिणी माँ। जगतोद्धारिणी माता दुर्गा, जगतोद्धारिणी माँ। जय जग जननी, जय जग जननी, जय जग जननी माँ। जय जग जननी, जय जग जननी, जय जग जननी माँ। जय जग जननी, जय जग जननी, जय जग जननी माँ। जय जग जननी, जय जग जननी, जय जग जननी माँ। जय गौरी देवी रणचंडी देवी, जय गौरी देवी रणचंडी देवी, जय गौरी देवी रणचंडी देवी, जय गौरी देवी रणचंडी देवी। जय शिव रमणा जागो माँ। 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 जगतोद्धारिणी माता दुर्गा, जगतोद्धारिणी माँ। जगतोद्धारिणी माता दुर्गा, जगतोद्धारिणी माँ। जगतोद्धारिणी
जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ जगतोधारिणी माता दुर्गा जगतोधारिणी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय गौरी देवी रणचंडी देवी 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 जय शिव रमणा जागो माँ 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 जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ जगतोधारिणी माता दुर्गा जगतोधारिणी माँ जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ जगतोधारिणी माता दुर्गा जगतोधारिणी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय गौरी देवी रणचंडी देवी 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 जय शिव रमणा जागो माँ 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 जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ जगतोधारिणी माता दुर्गा जगतोधारिणी माँ जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ जगतोधारिणी माता दुर्गा जगतोधारिणी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ जय गौरी देवी रणचंडी देवी 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 जय शिव रमण
जागो माँ। जय शिव रमणा 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 जागो माँ। जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी 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 माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय गौरी देवी रणचंडी देवी। 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 जय शिव रमणा जागो माँ। 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 जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी 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 माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय जग जननी जय जग जननी जय जग जननी माँ। जय गौरी देवी रणचंडी देवी। 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 जय शिव रमणा जागो माँ। 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 जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ। जगतोद्धारिणी माता दुर्गा जगतोद्धारिणी माँ। Hari Om Tat Sat. So after the Havan and Kirtan, we would like to request
Swami Dharm Kirti ji to inspire everyone, especially the graduating students and all the students and sadhaks of yoga. We have been waiting to hear Swamiji for a very long time. Hari Om Tat Sat. 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 This morning when I got up, Vijay Dashami Day, it's our tradition to take the books that you have kept in front of Saraswati and read a little bit. So I just opened the Bhagavad Gita at random. And the verse that came out for me is the 19th verse, in which it is said that just before the war started, the Kurukshetra war, there was a loud tumult reverberating through heaven and earth, and that pierced the hearts of Dhritarashtra's sons. I'm sure most of you know the story of how the Mahabharata happened and the Kurukshetra happened. So here they say that those hearts that are rent, broken, are the hearts of Dhritarashtra's sons. It didn't happen to the Pandavas or the Pandavas' sons. Because Dhritarashtra's sons, where are they? In our life, where are they? They are inside us. We have hundreds and hundreds of Dhritarashtra's sons within us. And we have just a few of the Pandavas within us. You would have learnt during the course of your classes about the Shreyas and Prayas. The Shreyas is where you choose what is right. You have your choice. What is right? And what is right is what is good for everyone, not just for me. And prayers is where you go running after what is convenient, comfortable, and nice. It may not be right for somebody else. It may not even be right for me. It may look nice temporarily. I might feel very happy about it for the immediate moment, but you don't know if it is going to last at all. So, we have a few things that come into just one shloka there. Why do the hearts of Dhritarashtra's son shake? Because they went after what they wanted at every moment in life. They had a jolly good time doing it also. And they struggled also a little bit to get it. You don't get things, nice things easy also. And that is inside us. Coming to the ashram is not something that is easy. Staying in an ashram is not easy also. But what do you take out of it when you go? That matters. Because where is your ashram? I was told this 40 years ago by a very learned person's son, Paul Brunton, who stayed in Ramana Ashram. I was going away from the ashram at one time and I was thinking, oh my God, now how will I be without the ashram? It was so nice. When you look back, you forget all the hardship in life. And then this man said he was a trader. He was a corporate person in business, and somebody asked him, Paul Brunton's son, someone asked him, how is it that you have grown up on the lap of Ramana Maharshi, basically, and you are going into business? Why didn't you start an ashram? They asked him in the public. So he took out a picture of Ramana Maharshi and he showed it to people in the audience, and he said, you know, my ashram is within me. I carry my ashram within me. My guru is within me. I carry him within me. I don't have to go anywhere. If I go anywhere, fine. But if I'm carrying the ashram and if I'm carrying my guru with me, I can go sit in the marketplace. I can go sit in a war-torn city. It wouldn't get me upset because he's there with me. She's there with me. She is the Guru Swarupini. And we have been doing these 9 days now. All of you, yes.
9 days must have been tough sometimes and fun sometimes also, right? The discipline must have been hard and the rest of it is nice. But that's how it happens. If you're going to be a warrior, you have to be trained to be a warrior. The training is no fun all the time. Because you have to carry this training, go out. Why? Not just that you will remain happy and get moksha, so that you can share it with other people outside. At a lot of cost. Sometimes your family might be annoyed with you, sometimes they might be upset with you, sometimes they might say, this is not it, that is the way to do. Why do you go to Satyananda? Why don't you go to Ramakrishna? You will have all these things coming, but you got to be steady on what you are standing for. So what are we standing for? We are standing for Satyam, not Satyananda. We are standing for the truth, Satyam. His name spontaneously happens to be Swami Satyananda. But we are standing for the truth. And what is the truth? The truth is that she is everywhere. Your Guru is everywhere. He is not only sitting in this picture. He is not only sitting in ADY. He is not sitting only in Mungir. He is not sitting only in Rikya. He is everywhere. You just think of it yourself. You've been learning asanas to teach. And pranayama. This is our body. You're practicing asana every day, you're teaching asana every day. And sometimes you'll see on WhatsApp, children and old people, they say 99-year-old, 101-year-old doing a headstand. So what? You're doing the asana because A, you want to understand your body, the limitations of your body, and what it can do for you to help you on a journey. It's like you come on some of you have come from abroad to this retreat. It has been very fortunate for you because you have been brought here by a power. It is not the aeroplane that carried you. It is not the bus or the train, the car from the airport to here that carried you. Your body carried you all the way, and that is what the body is for. It's your vehicle. So when we decorate our body which is good, it's like doing during Vijay Dashami, people decorate the vehicles, then drive them, no? They don't take the vehicle into the bedroom and sit with it. So we realize that we have a body, it is our vehicle. It takes us from place A to place B. Now, who is taking this body? Are you able to always move your body when you want? Sometimes I find it difficult to sit. So what happens? You have the vital air, the prana going in and out, in and out. The best way to see whether you're in control of your breath or your body is to just stop your breath for 2 minutes and see if you can maintain that for a long time. You can't, it will come by itself. So what is the breath? The breath is the divine prana. She is coming, the Ma. She who has given birth to you. That is why women their uterus is called the Brahma Garbha. And here when they are talking of women, they are not talking of gender. They are talking of an inner energy. That energy which makes your car to move, your body, that energy which brings your prana in and out. And where does she sit? She sits inside you. You have her sitting here. We just don't realize. She sits inside you and she will ask one breath as it comes in, what did the Sishya, the student say? And the breath will tell her, they were wondering how much longer it will take. Or somebody else was wondering what is for lunch. Someone else was saying, what a lovely time we are having here. Did they ever look for me? She'll ask. Not quite, the breath will say. Doesn't matter, she'll say. Give them another chance, and your next breath comes. Another chance, the next breath. And you go on getting this breath ever since we have been put into manifestation. The same breath we are carrying, the same prana from the time we were stones, worms, animals, monkeys, whatever it is, evolution is,
human beings and for future journeys also. It's the same breath, the same prana that we are carrying. And the same prana you are breathing, I am breathing. The same prana I am breathing, Swami Niranjan is breathing. The same prana he is breathing, somebody in the US is breathing. Same prana he is breathing was breathed and is being breathed by Swami Satyananda. It was being breathed by Swami Shivananda. The same breath. It goes right back. That is why we say, Sadashiva Samarambham. The Shiva means the auspiciousness. Shankaracharya Madhyamam. He comes in between Shushvasave. Asmadacharya, Shankaracharya, Paryantam, Vande Guru Paramparam. This is the Guru Parampara, not somebody who came from Almora and sat in Bihar. The Guru Parampara is that energy which flowed through these people and came to you because you have reached that point where you are authorized to receive it. Everyone is authorized, but you have to see that it's there. So this lineage is what we are talking about, which brings this prana. And now you come to the ashram and you've done the Havan. I think every day you must have done it, no? What is the Havan? We are putting all that is negative, the Rakshasas, the Mahishasuras, the Nishumba, Shumba, whole lot that is within us, the Dhritarashtra's sons, we are putting it all into the fire, not out there. That is symbolic of putting it into the fire of aspiration inside. That is why Agni has so much importance. Agni burns everything. Yesterday somebody was telling me, when we die, this person said, and I was listening, I thought it's true, I hadn't thought of it like that. She said, when you die, we can't even take our ashes. Forget about the rest of the things that we are collecting. That's very true. So nothing in the body or nothing in your mind is permanent. Why is the mind not permanent? Because the mind takes all the vasanas from everywhere. You have left some thoughts in your mind, feelings in your mind that you have not accomplished in this lifetime. You come back, you will come to the same place, pick it up and continue. So that is why you put it all into the fire and say, Sarvam Amba Arpanam or Sarvam Krishna Arpanam. I'm giving you everything, my good, my bad, my incompleteness. You take it and you handle it. You're the driver, you're the vehicle, you're in my body, you're in my mind, you are in my breath. So when you realize that, and then when we realize also that this breath is there in everyone, so everybody is a manifestation of the ultimate Devi, then it is called Advaita. Not just every person, every creation. This mic also has it. The harmonium has it. Words, anywhere words. This book has it. Why? The book contains words, no? So what is in the book? The books are vibrations. The original bija vibrations. Those words are aksharas. Akshara means something that can never be destroyed. This aksharas, each akshara has done tapas, penance for hundreds and thousands of lifetimes to be included in a grantham. Grantham is what a purified soul teaches to people. And that can be the Bhagavad Gita, it can be the Quran, it can be the Granth Sahib, it can be the Bible, it doesn't matter what. Some mystic at some point received something special, the Devi's breath, and recognized it as such. And he says, I'm not doing it, she is doing it. And that sound vibration comes into your book. So when you're reading a book, you don't read the words. You see the Devi that you're awakening within you. And when you do the words that some guru has talked about, any guru anywhere, different people call different people gurus. But the Gurutvam is the mother. That's why she's called Dakshinamurti Rupini or Guru Rupini. Because Dakshinamurti is the Nirguna form of the Supreme Brahman. You can't see, you can't feel. Because it's so
vast. You can't even imagine it. Even they say the creative power like Brahma and Vishnu can only see one bit of her. That Shakti is there today in the ashram. Because you have all been sincerely doing what you're doing, she has come inside you. So now you have to protect her and keep her there by non-violence. That is our first yama, no? Yamas and niyamas is what Swami Niranjan is talking about today, not how you stand on your head. That is part of it. He is talking about the yamas and niyamas, the samskaras that he is trying to give people. Meaning you start with non-violence. How is non-violence? You don't judge yourself and say, I'm not good enough. That is violence. You don't judge somebody else and say, hey, she doesn't know. That is violence. You look at a plant that is fading and dying and you say, get rid of that thing. That is violence. Remove it if you have to remove it, but that is her in that form. She will be in the form of our dead bodies also when we go. And she will be in the form when we come back. It's a leela. What is the difference between leela and effort? I just read it this morning. Effort is you put in some stress into getting things. Leela is where spontaneously it is done. There is no effort there, it just happens. And it happens for every person, everyone. So when you, sometimes you bang a door shut. I've done it myself. Once I took a scooter, I had to put it out and I banged it there. Also I was a little irritated. And Swami Satyananda quietly, he was at the back watching and he said, what did that scooter do to you? So, when a guru speaks, your guru, say Swami Niranjan, somebody has some other guru, it doesn't matter who it is. When a moment of receptivity happens, listen to the vibration, not to what he's saying. You see, sometimes a guru that you go to will say, have you had Ganga Snan? Have you eaten halwa today? He is not telling you about the halwa you are eaten. He is telling you about something nice you have taken in. He is not telling you about snana you are having outside. He is talking to you about the washing away of the dirt inside. Don't try to use our logic, because intellect is a very big friend along the way, and after some time it becomes an enemy. It will mix you up. But just trust. Hope, faith and love. These are three things. Jesus also talks about it. Hope, faith and love. And of these three, hope is for the body. We sit with the hope that we'll live forever. We don't. But if you think, okay, this is going away, something else will take care of a body, my car. That is hope. Then you come to the mind, and the mind will tell you, there's so many mistakes I'm making. We are incomplete, we are imperfect, but still she's taking care of us. That is faith. And then you realize the way she is taking care of us is unconditional love. She cares for you. You make a mistake, it's okay. She comes back as the next breath. And she comes in everybody, a villain, a terrorist. We have no right to judge, because we don't know at what level we are and what we will be in another lifetime and what we were sometime before. Just stick to our own perspective of prayers and shreyas. Think of the other person, whoever it is. Take care of them, their needs. That's why Swami Shivananda used to say, give, love, serve. When you have that sort of understanding that this breath is common for everybody, and she is in that prana and she is in me, then this becomes our moving temple. Now we don't dirty a temple. So keep it as much as you can, as pure as you can, but offer it to her. Don't say, see, I've been doing my japa, 1,000 times, I ought to get some siddhi now. No, offer it to her. She knows where it has to go, who needs to take it. So that is what I have learned in this Navaratri, and I'm sharing it with all of you. We are all walking on the same path. We are just different cars going together in a team. So Hari Om Tat Sat is very, very blessed
to be in everybody's presence here. I just remembered one small story I'll tell you, which I've told you all many times, some of you. There was a group of traders, cotton traders, going to a nearby town to sell the cotton. So they were going on camels. And they stopped in the evening for rest. And when they stopped, they sat down and they were talking casually like all of us. Then one of them said, how wonderful it is to go in on the camel, no? And somebody said, yes, of course. All those people going in the cars and all that, they are not at all, they don't have this camaraderie. They're not just as good. Then someone else said, but it's better to go in the flight because it takes you fast also. From there, it went on to politics, as everything will. And through politics, it went to religion. And somebody said, you got to worship only Sri Rama, then only you'll go. Somebody said, only Shakti. Someone said, only Allah. So they started fighting there. And there was an old man sitting there. He's been going on that caravan for many journeys. So when they went and they asked this old man, see, you've been going and you never had a quarrel with anybody. You went quietly and you came quietly. What is the secret? Which is the God we should worship? So this old man thought for a second and he said, see, when a cotton merchant, because they were all cotton merchants, when you take the cotton to the town to sell it, the cotton merchant there who is buying it will not ask you, did you come by train, did you come on the camel, did you come in the flight? He'll say, how good is your cotton? And how do they assess the cotton? Because the cotton surrenders. You can pull it apart. The person who's working with the cotton, you can beat it. And at the end of it, this cotton will come to be helpful for somebody else. Someone else who's sitting on the cushion or on the bed, not for the cotton. So, let's all be like cotton. Hari Om, that's it. Thank you, Swamiji. So now we will have a very special part of the program. And for that, I request Swami Sri Vidyaji to please come. And Sumanaji, Mantrikirti ji, Ramnath ji. The graduating students will receive their certificates and the prasad. So I'll call out the names. You can offer your pranam to the Guru and receive your prasad. Bala Subramanyam, Nitya Kailash, Ravi Vishwanathan, She can't keep the smile off. Pavitra, Raghuveer,
Sara, Nirmala, Sushil, Sharada, Shweta, Ashi, Vedavati, a big round of applause for the graduating students. They are the soldiers of the Guru's army. They are the peacekeeping force in the society. They are added to the group. It's very much needed. And we pray to the Guru to give the inspiration and the grace so that they feel inspired to continue their sadhana and share it with all. Continue sharing it with all. Otherwise, it's very easy to get into the routine of your life, and after some time you say that I did 5 years back the course, but I have not taught anyone. So we wish, the reason that we are doing the teachers training is that we want you to share it with everyone. Whatever benefit we have received, we want you to share it with everyone. Now I would request some of the students to come and share their feelings and experience. Ravi? Hari Om Tat Sat. I think first time in my life I felt a need for a kerchief. It's like, I think that's the significance of the start of the journey from the head to the heart. I think this is the beginning of it. And it started long time back when I was 11 years old. And I haven't been to Munger after that, when my parents took me to Munger. That was the first and last time I went. But here in ADY, I feel I have not missed Munger at all. It's here, right here, like Swamiji said, it's everywhere. So that impression from when I was 11 until now, I don't think I have ever missed it. And here, in this space, it's really alive. I think it's... In everything we see around here, I can see the same
same Munger is in front of me, like same Swamiji which I saw and met, and same atmosphere, the same presence is reverberating all around right now. And life just comes a full circle, I think. And that Leela, it just keeps going. It's just, that wheel is continuously moving, and you can feel that. It doesn't stop for anyone, it just keeps moving. And the best we can do is to align to that pace and rhythm and enjoy that. And that's what we are here for. And that is the only realization we need, I think. And that's the graduation we all need in life. And if we can get that, I think that's just life. And there's no more words, like no aksharas, no words can describe that. And very grateful to be born to experience this, and really thankful to Atma Darshan and Swamiji and Yogmaji, Swami Dharmakirti, Devanandji, Devashriji, all of you here, like, who could make us experience that Leela and work with that and experience that in every moment. I think that's what we are born for, and if we can experience that in everything we do, we are successful, I think. And really grateful to Atma Darshan to be that force here in South India, far away from Munger, and that is the first team I want to thank. And second is the COVID situation, which helped. It was a devastating thing, but that's what brought us together, this whole team, and from far away places. And we could do 2 years of course without meeting each other, and that shows the power of the grace of the Gurujis. It can flow anywhere and through any medium. So whether it's Zoom or technology, it's only in our mind. We can use it for a positive shreyas or prayas. So it's always the choice is with us. The things are there, how do we use it? And we all used it to uplift ourselves and hopefully, like Devanandji, see for others. So always, that is a second thanks I will give to the pandemic to make this happen. And thirdly, definitely, like my parents and my ancestors, and because of whom I am here today. Like otherwise I won't be here. And I can feel that presence of all the previous births and people who have worked hard and done tapas to grandmothers, great-grandmothers, grandfathers, because of whom I am here today. And I can feel that, and without that will not be possible. And most importantly, my wife and children. I think they have sacrificed too much last 2 years, the most, and I think big thanks goes to them. And I really have found new brothers and sisters, all the batchmates, and would want to really be in touch and do something all together and keep meeting and continue this. Yeah, these are the things I wanted to say, and thank you so much. And yeah, feeling just divinely blessed today.
Hari Om Tat Sat. Yesterday, I think after dinner, Devananji and Yogamaya ji asked me if I can share my feedback. And I've been thinking about it since then. Spent 1 hour with my diary and pen and didn't come up with anything. I think the first sleepless night in my life. And whole day morning. And I haven't come up with anything to share. But I've very acutely come and aware of the grace that I have received. Not just for the past 2 years, but I guess since I've been born. Sorry. I guess so much of not being aware and a little bit of awareness now, probably like a grain of sand. And the beauty I see in that little bit is something can't be described. And really grateful and humble for this little bit that I can see now. And I have no experience to share because I feel the journey starts now. Okay. It's very true. The journey starts now. Because so far you knew how to, that day your class is there, this time your class is there, this is what you have to do, this is what you have to do. Everything was guided. But now you are on your own. So the journey starts now. You are on your own means now you are not part of the course, isn't it? So you have to now start planning. And one thing which I would like to share from my personal experience, which really helps, is satsang. Satsang, being connected to the ashram, to the saints, to the good people, saintly people. And when we keep in touch with them, when we be in association with them, like Swami Dhamkirti ji, Swami Yogamaya ji, Swami Sri Vidya ji, when we come and meet them, spend some time with them, it may be just, Swamiji will say that, clean this place. But in that, something happens within. So that association, if we can hold on to that one thing, then we can be rest assured that we are on the right path. And in today's world especially, it's very difficult to be on the right path. It's not easy. Following the path of dharma is not easy. There are many temptations. Even while teaching yoga, there will be many temptations. Money will be temptations. More than money, name and fame. People will come and say, oh, you are Guru, you are my Guru, you are God. You have solved my back pain, you have solved my shoulder pain. So if we fall prey to that name and fame, then we totally deviate from the path. And there are many examples, many yoga teachers, great names. You see them on YouTube and social media and many things. But we pray to the Guru that we don't want to take that path. We want to be connected to the feet of the Guru and maintain that connection. And that is possible only if we maintain the satsanga. The names that I told, the ashram that I told, here you won't be praised for anything. Rest assured. If you do good, fine. If you don't do good, you will get a good scolding. And that's the way. That's the way. That's the way we maintain that connection and association with the Guru. If we are carried away by that, then that is something which we have to be very, very watchful. And that's why we keep telling, don't call anyone Guru. Guruji, Guruji. We have the habit of using Guru in as teacher, but Guru is very different, very, very different.
We are no way closer to the Guru. If we can become a disciple, we have fulfilled the purpose of our life here. So, it's possible only if we maintain that satsang. People who can tell us our weak points and help us in improving that, encourage us. And this is one thing which we have to put our effort to hold on to. We are always busy in our life. But if we can make a frequency like once in a week, once in a month, once in 6 months, for people who are from abroad maybe. But come, spend some time here, maybe 10 days during Navratri. And those who are here, they can come on Guru Bhakti Yoga. One more thing I want to tell you, this is a very special time that you are graduating. Very, very special time. Because next year, starting from December, it's the anniversary of Sri Swamiji, Swami Satyanandaji's 100 years of his birth. So very special year, 2023, starting from December. 25th of December he was born. So it's a very special time, and for the whole year, next year, there will be programs in Munger, Rikhia and some other places, and there will be a lot of activities and events happening. So you have graduated now and you can be more involved and part of it. It's like a blessing that has come to all of us. So now we will conclude with the Shanti part. Then we will have a group photo. And then we will have prasad. Close your eyes. Making your body still. Taking the awareness to the Hridaya Akash, which is full with grace. Visualizing a flame burning steadily and brightly at the center of the Hridaya Akash. We will chant Om 3 times and Shanti Path all together. Breathe in deeply. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya, sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Om Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urvarukamiva Bandhanat, Mrityurmukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Today is also 5th
of October, we have the Guru Bhakti Yoga in the evening. So now we'll go for the group photo.